back to my YouTube channel. This is Deepshikha again. So this is the second monument we are going and this is called Agrasen की बावली, which is like very famous क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग्स हुई हैं और उसके बारे में एक बहुत ज़्यादा रूमर ये है कि वहाँ पे भूत होते हैं. So we are going there today. So let's go. Basically, to go to Agrasen Baoli, you have to come from metro, and the nearest metro stations are Connaught Place, Rajiv Chowk, and Barakhamba. Barakhamba is much nearer than CP because you can come by walking to Agrasen Baoli. अभी यहाँ से हेली रोड पे है, तो हेली रोड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह भगवान की पिक्चर्स लगी हुई हैं. गणेश जी, कुंभकर्ण, ओम and everything. I'll tell you the reason why ये लगा हुआ है little bit later. Till then, the fact number one is it is built. ऐसा कहा गया है. They are not sure because इसका evidence नहीं मिला है. And that is, it has been built during the time of Mahabharata, which is like, oh my god, long time ago. But there is no evidence has been collected yet और ये तक कोई proof नहीं है. So the first fact is this. Let's go with the next fact and the next place. This road has been used for like lot of shooting also. This is a center place for Bollywood also. क्योंकि आपको बहुत सारी movies दिखी होंगी जहाँ पे इस road पे भी shooting हुई है, उस place में भी shooting हुई है. I'll show you and मैं आपको एक movie का नाम बताती हूँ. उसको देख तो पक्का याद आएगा कि यार ये shooting तो यहाँ पे हुई है. A lot of songs has been shot also. So let's go फटाफट to show you the place. कोई भी सुन है ना वो की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. I always pronounce it wrong. It's Agrasen. इसको हम खारी बावली भी कहते हैं. And the basic purpose was to build this was to make a step well to preserve water. Later it has been used for the purpose of keeping prisoners in this. And फिर जब उसके बाद after some time government took over it and they started using as stepping once again. There are a lot of crowd in here. So I'm standing in the middle of the stairs. As you can see, we have entered the premises of Agrasen Baoli. The third fun fact is that it has 103 steps made by redstones, made from redstone, sorry. And as you can see, it is like full of people. In here you can find different kind of people, college students, photographers, people coming here, foreigners to see the monuments. It is quite a hub for people to chill out and click a lot of pictures. The view is amazing. I'm gonna get clipped too. So guys, there's a fact number 4 and that is in here people have reported that there are very weird noises come after 6 p.m. and that is why I told you there was pictures. Remember that there were pictures of gods everywhere. तो इसलिए है क्योंकि 6 बजे शाम के बाद यहाँ पे बहुत weird noises सुनाई देते हैं and they think that it's a very haunted place and बहुत लोगों ने witness किया है according to sources. So cool. पांचवा फैक्ट ये है कि दिस प्लेस इज फॉर पिजन्स ऑल्सो. यहाँ पे बहुत सारी पिजन्स हैं, बहुत सारी, और ये जगह कभी नहीं छोड़ती है. ठीक है, ये दैट्स वाई फोटोग्राफ्स कम है कि आपको यहाँ से इतना मस्त शॉट मिलता है ना. यू सिट इन बिटवीन एंड द पिजन्स कम, दे गेट द शॉट्स. तो जो इतनी सारी पिजन्स हैं यहाँ पे जो कभी नहीं छोड़ती है, विच मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द रूमर्स अबाउट बीइंग हॉन्टेड प्लेस इज ट्रू. That was the fifth fact. And I'll tell you a little bit story about this, which I heard from people. I'm not sure it's true or not. तो basically ये बना था to preserve water. ठीक है, तो basically it's a step well which was built in 14th century again. And उसके बाद when I think Britishers came और एक सल्तनत आई थी, उन्होंने क्या किया, इस प्लेस को यूज़ करना स्टार्ट किया as to keep the prisoners. तब देख रहे हैं वहाँ से आते थे prisoners and वहाँ पे बिल्कुल डाउन में जाके बिल्कुल नीचे
पे वो लेडी खड़ी है, वहाँ पे हम अभी जाएंगे एंड वहाँ पे से अंदर ले जाते थे प्रिजनर्स को मार मार के। एंड जो द प्लेस बहुत छोटा है, लेट्स गो एंड शो यू द प्लेस। जा रहे हैं तो प्रिजनर्स को यहीं से भेजते थे। आई गो डाउनस्टेयर टू चेक आउट। फिर वहाँ पे उनसे काम कराते थे, मुझे नहीं पता क्या है, बट कहा गया है कि यहाँ पे नीचे उधर के साइड स्केलेटन्स भी हैं। आई एम लाइक सो स्केयर्ड। एंड यहाँ आपको बैट्स बहुत सारे मिलेंगे, पिजन्स बहुत सारे मिलेंगे। In spite of like everything, in spite of all those rumors, it's a very beautiful stepwell. It is very beautiful as a monument, and I really feel proud that in our country we have a lot of monuments to go and which is preserved in a very nice way. तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमको कितना crowd आया है। You can see behind my back how many people are there. And look at the you can like shot the pictures, like it will become amazing. Instagram पर भी बहुत सारे photos है। यहाँ पे अलाउड नहीं था जब हम आते थे ना, तो यहाँ पे लगा। So here is the well, and we go all high. As you can see, it's a very big one. Oh God! Can you see me? I don't know about that. So basically, it's from here, and we're going out now. 2015 में आई थी तो एंट्री नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारे बैट्स थे, बहुत ही वियर्ड नॉइजेस होती थी, तो मुझे लगता था कि नई प्रिजन वाली बात सच है। आज यहाँ पे आई हूँ तो एंट्री भी है और यहाँ पे एक बेल भी हम देख सकते हैं बड़े आराम से, तो ये स्टेप वेल भी है। तो आई एम नॉट नाउ कम्प्लीटली श्योर कि विच स्टोरी आई शुड बिलीव, सो लेट इट बी मिस्ट्री ओनली एंड लेट अस जस्ट explore the part कि either it is a haunted place or just a monument which is given by to us from a man who got this idea a long time ago. Thanks to that man. So guys, this is the Amritsar ki Baoli. This is a step well. You can say step well, you can say as a prison, you can say as a whole India heritage. जो भी है, it's a very beautiful architecture. It's a very beautiful place. It has a lot of stories, rumors which will excite you. It has a view which will attract you to come here to click pictures. If you're a photographer, to click, and if you are a person to get clicked. So this is it. This is me, Deepshika, signing off. See you until the next video. Do subscribe my channel. Do not forget to share and like.